गुड इवनिंग एंड वेलकम टू गना शॉट। गना शॉट में आप सबका स्वागत है। वणक्कम, प्रणाम एंड जय हिंद। आज हम बात करने वाले हैं इजराइल हमस वॉर के बारे में एंड व्हाट लाइज अहेड। और इसके बारे में बात करने के लिए मेरे साथ हैं जनरल लेफ्टिनेंट जनरल आइक सिंगा। राइट। General Singha is the ex head of mission and force commander of UNDOF. What is UNDOF? It's an UN authority for disengagement observation force in Golan Heights, right? Which is meant to oversee the whole disengagement process there. And most importantly, being the head of the mission, he had a political role also. And he was there for 3 years. And in 3 years, he knows the ground situation better than most of us. In fact, better than many of us put together, right? A man on ground who's seen this entire area from Lebanon down to the southern tip of Israel is here with us. More importantly, and very importantly, we are Coastmates. And we are Coastmates from the National Defense Academy, right? We've grown up together and we've retired from the army almost together. Okay. And we could have no one better than him to talk to us about Lebanon. Uh, Good evening, Ike. Welcome. And it's a pleasure to have you on the show. Good evening, Shankar, and it's a great honor. Thank you for getting me on the show. And good evening, namaskar, viewers. आपके साथ interact करने में बहुत मजा आएगा, I'm sure. Yeah. Before we get into Lebanon and Hamas and Israel, I must tell you, General Singha is also an actor. He's acted in a movie, Avrodh, and his son is an actor, and both his sons are actors, and his wife is a terrific poet. How do I know she's a poet? Because the book she wrote, I had the honor of attending her ceremony, launch ceremony. Right? It's a great, and as a family they are great, and it's an honor to have you over here, Ike. So shall we start the proceedings? Thank you very much, sir. And I must tell people that it's good to have friends at the right places. Okay. Oh, right. Okay. Now, right. Okay. आज हम बात करने वाले हैं Israel Hamas war. That's why now that I've introduced General Singha to you in the right manner, now you understand the import of this talk. But इससे पहले हमने 4 वीडियो किया है on the Israel-Palestine conflict. Initial assessment लिया, उसके बाद जनरल शौकीन चौहान के साथ we went over the thing because he's also served there. Then I did a thing on Agniveers and women in combat, and yesterday we discussed about what issues we can learn from this war. 5 main issues which I spoke with General Satish Dua, and today we are doing this. And tomorrow, not tomorrow, on 15th, Sunday evening, we're going to do Israel Hamas war, India specific issues with General Atta Hasnain. So it's going to be a series because, in my way of thinking, this war and this entire area is of importance, terrific importance to all of us for one main reason. In the last century, when the Britishers decolonized and the World War ended, they left the world with 2 major problems. One is the India-Pakistan problem, and second is this problem. And these are very complicated problems. Whatever comes out of this problems, whatever it is, we have a lot of similarities. And understanding this has a huge issue, or rather a similarity to what we're going to do when we deal with Pakistan. Okay, having said that, I would like you to subscribe to Gunnershot. आप सब्सक्राइब कीजिए और ये पूरा कवरेज जो मैं जारी रखूंगा till the whole thing quietens down. You'll get notification if you press the bell icon. But ये है political map of Israel. On the east is Egypt. On the east is Jordan in the pink color. West is Egypt. To the south is Saudi Arabia. Saudi Arabia doesn't have a contiguous border. इसके साथ जुड़ा हुआ नहीं है इसराइल के साथ. अच्छा, ऊपर आप देखेंगे लेबनान है और थोड़ा इनका साथ सीरिया के साथ भी बॉर्डर है.
चारों तरफ ये गिरे हुए हैं और तकरीबन ये अरब वर्ल्ड के साथ गिरे हुए हैं, जिनके साथ इनका 67 में लड़ाई हो गया, 48 में भी लड़ाई हो गया, और यम किपुर वॉर 71 में भी हुआ और बाद में भी हुआ है। और बीचों बीच अगर आप देखेंगे, इसराइल के जो पीला कलर है उसके अंदर एक दो ग्रे बिंदु हैं, वो है वेस्ट बैंक जो दिखाया है और गाजा पट्टी। ओके, जो गाजा पट्टी है, ये है गाजा पट्टी, हम सब सुन रहे हैं, सब वी आर अप टू स्पीड ऑफ व्हाट्स हैपनिंग। आप देखिए गाजा पट्टी, मैं जस्ट दोहराऊंगा, इट्स 41 किलोमीटर्स नॉर्थ साउथ, 6 to 10 kilometers east west, narrow, and agar and highly populated. It is supposed to be the most densely populated part of the earth. And just to give you an idea of this, ये जो रेड बॉक्स के अंदर है, इसको मैं दिखाऊंगा सैटेलाइट फोटोग्राफ। आप देखिए, बाएं है गाजा, और गाजा सिटी का एक दृश्य कितना घना है, हाउ डेंसली इट इज एंड इज फुल ऑफ बिल्ट अप एरिया, एंड ऑन द राइट इज इजराइल, and you can see the fencing very clearly. Okay, and today what we're going to cover generally is this: intensity and scope of the Hamas attack, Israeli intelligence capability, the wartime unity government which has come into being, the likely phases of the Israeli counteroffensive, what are the options Israel has. We'll go over it one by one, and then of course the involvement of regional and extra regional powers. Right? With this, we'll start with the intensity and scope of the Hamas attack. Over to you, Ike. Just take it on. And let me know Thank whenever you you. want a map, just let me know. I'll get them on. ओके, थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि गाजा और इसराइल की ये पहली लड़ाई नहीं है, और ये छुटपुट इनके आपस में होती रही है। 2008 2006 में तो ऑफ कोर्स दूसरी तरफ हिजबुल्ला लगा हुआ था लेबनान में, और उसके बाद 2012 2014 2021 एकदम कोविड के बाद 2022 एंड अब 2023 में। लेकिन ऐसी कभी इंटेंसिटी क्यों हम ये शुरू में डिस्कस करना चाहते हैं, मैं अगर आपको बताऊं कि 1956 1956 जो हमारा मेरे जन्म ईयर भी है, तब साइनाई कैंपेन हुआ था, सुएज कैनाल कैंपेन, एंड उसमें और 6 डे वॉर में मिलाकर जितनी कैजुअलिटीज हुई थी इसराइल की, उससे ज्यादा ये पहले दिन हो गई थी पिछले शनिवार को। तो ये देखिए आप, दो लड़ाइयों जितनी कैजुअलिटीज, एक में 300 कुछ हुए थे उधर सुएज में, और यहाँ पर 700 कुछ हुए थे। जो योम किपुर वॉर है, जिसमें पूरा टैंक और एयरक्राफ्ट सब कुछ सबने हिस्सा लिया था, उसमें जो कैजुअलिटीज हुई थी वो इस पहले दिन से दुगनी थी। मतलब इतने दिन में 2600 उनके सोल्जर्स की डेथ हुई इसराइल की, और यहाँ पर एक ही दिन में 1200 हो गए। तो इसका मेरे को लगता है कि हमस ने भी शायद ये प्लान नहीं किया होगा कि इतनी कैजुअलिटीज वो लेंगे। जैसे जैसे सक्सेस मिलती रहती है तो मतलब वो मिलिटेंट हो या कोई भी, वो आगे उसको एक्सटेंड करता रहता है। और ये भी है कि जैसे कल की मेरे ख्याल इसमें भी आया था कि एक सोल्जर के लिए एक बार उन्होंने 1000 फिलिस्तीनियन प्रिजनर छोड़े थे। तो अभी अगर इनके पास 100 बंदे हैं तो उनको उनकी सेफ्टी, उनको छुड़ाना, ये सब कुछ इसराइल को सोचना पड़ेगा इससे पहले कि वो ग्राउंड हमला करना चाहें। ऑलरेडी पिछले 5 दिन में इसराइल ने एयर अटैक, सी से और आर्टिलरी गन्स के फायर से 1100 पैलेस्टीनियंस को मार दिया है और 5800 के करीब इंजर्ड है। तो अभी आने वाले दिनों में कैजुअलिटीज गाजा में तो बढ़ती रहेंगी, और जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है वो भी धीरे धीरे, अभी पहले 2-3-4 दिन तो वो सभी शॉक में थे, लेकिन धीरे धीरे वो भी ह्यूमन राइट्स के इश्यूज वगैरह उठाना शुरू करेंगे। और अगर जमीनी हमला करते हैं इजरायली तो कैजुअलिटीज अटैकर की तरफ भी होंगी। Yeah. So we go to the next point, right? And let's look at the issues of intelligence capabilities
And what do you feel is the why did it fail, and how much intelligence they have, and what is required if at all the Israelis want to go in? That's that's the crux of this whole story. सो हम लोग सब यही समझते हैं कि इसराइल की जो इंटेलिजेंस एजेंसी है दे आर अबाउट द बेस्ट इन द वर्ल्ड, सबसे बेहतरीन है, कंपेयर की जा सकती है जितनी भी तगड़ी इंटेलिजेंसीज हैं। उसका एक कारण है, जब इसराइल फॉर्म हुआ था एज ए देश, एक मुल्क बना था, तो लोग दुनिया के हर कोने से आए थे। तो हर भाषा के लोग हैं उनके पास बोलने के लिए, हिंदी बोलने वाले भी हैं और रूसी बोलने वाले भी हैं। तो उनको हर जगह का उनको तंत्र उनको पता है कि यहाँ कैसे कैसे होता है, किस देश में कैसे होता है। और ये वही मोसाद है, ये वही इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं जो कि जब हम लोग स्कूल के फाइनल ईयर में थे, शंकर और मैं, ओलंपिक्स हुए थे म्यूनिक में, और इनके 12 या 14 एथलीट मेरे ख्याल उनको मार दिया था पैलेस्टीनियंस में। जब आप जाते हो, अभी तो खैर लड़ाई के कारण मेरे ख्याल कम टूरिस्ट जाएंगे, 18,000 इंडियन अभी भी हैं उधर, और हमारी गवर्नमेंट उनको वापस लाने की जो आना चाहता है बंदोबस्त कर रही है। तो जब आप जाएंगे वहां पर, आपको जो टूरिस्ट गाइड है वो सबसे पहले बताएगा कि कैसे दुनिया के हर कोने में जितने किलर्स थे जिन्होंने इनको मारा था, इनके एथलीट्स को, उनको एक एक को चुन के इन्होंने खत्म किया था। तो वो तो उसकी कैपेबिलिटी है। अब जब मैं वहां था, मैं सीरियन बॉर्डर पे था, बट मुझे शौक था इसलिए मैं लेबनान में भी जाता रहता था, गाजा के इधर भी जाते थे, अंदर जाने के बजाय, बट मतलब वहां तक जहां तक अपनी इजरायली फोर्सेस लगी हुई थी बिल्कुल उनके बाहर, एंड पूरी ब्रीफिंग वगैरह सुनते थे हम लोग। तो मेरे को ये बताया गया कि लेबनीज बॉर्डर में और गाजा में कहाँ से बॉम्ब आते हैं, इनको सब उसकी खबर है, कहाँ कहाँ से आते हैं, कौन से घरों से आते हैं, किस तरीके से वो फायर करते हैं, किस एंगल से फायर करते हैं, कहाँ पर हमस के पोजीशंस हैं, हमस के लीडर्स के घर कहाँ हैं। आपने भी सुना होगा जो हमस का लीडर है उसका भाई और उसके फादर की डेथ हो गई है इन किलिंग्स में। तो इनको सबकी खबर थी, लेकिन मेरा ख्याल जो सिग्नल्स थे, कई बार जो होता है जो आप कहना चाहते हो बिल्कुल ओपन में कह जाते हो और दूसरा बंदा पकड़ता नहीं है। जून जुलाई में कोई मीटिंग हुई थी, वहां पर कन्वे किया गया था कि कुछ ना कुछ हो सकता है। अभी इजिप्ट भी कह रहा है कि हमने 3 दिन पहले बताया था कुछ बड़ा होने वाला है, जो कि प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू डिनाई कर रहे हैं। तो वो सिग्नल सीरियसली नहीं लिए गए, और एग्जैक्टली 50 साल की शताब्दी योम किपुर वॉर, योम किपुर इनका त्यौहार होता है सबसे बड़ा पूरे साल में, उसके बाद 1 हफ्ते की छुट्टी होती है। उसी छुट्टी में वही चुनी है इन्होंने, और टाइमिंग्स बड़ी इंटरेस्टिंग है। टाइमिंग जो चुनी है उस, एक तो अभी इसराइल मैं देख रहा हूँ पिछले 10-12 साल से, उससे पहले से ही बहुत देशों के साथ दोस्ती करने में जुटा हुआ है, और उन्होंने यही अपनी इमेज की है कि हम टेररिस्ट के कारण हमारी सिक्योरिटी सिचुएशन कभी कभी खराब हो जाती है। सो टेररिज्म इज ए बाइंडिंग फैक्टर। सब देश कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ टेररिज्म सब में होती है। तो इसलिए उन्होंने काफी दोस्त बना लिए हैं पिछले कई सालों में। हमारे और भारत के और इसराइल के डिप्लोमेटिक रिलेशंस नहीं थे, हमारे राजदूत हमने आपस में नहीं एक्सचेंज किए थे, और 1993 में पहली बार हमारी एम्बेसी उधर गई और उनका एम्बेसी यहाँ खुली है। तो सिचुएशन बदली होती जाती है, लेकिन अभी क्या है, यूएई, ये आपने सुना होगा, I2, U2, इंडिया, इसराइल, यूएई और यूएस के उसमें अम्ब्रेला में हम चारों मतलब देश कुछ चीजें शेयर कर सकते हैं, कुछ अपनी collective security in the Middle East and the neighboring areas, as also commercial
रिलेशन बढ़ा सकते हैं। हमारा यूएई के साथ बहुत अच्छा चल रहा है और इसराइल के साथ भी चल रहा है। अभी सऊदी अरेबिया भी जैसे ITU2S शायद हो जाता तो वो भी नजदीक आ रहा था। तो एक ये टाइम था कि जो बेसिक मुद्दा है अरब इसराइल का, जहां से 1948 से शुरू हुआ काम, वो बैकग्राउंड में जा रहा था और लोग भूल चुके थे कि पैलेस्टीन में क्या प्रॉब्लम है, और अभी एकदम वो दोबारा उभर के आया है। तो इसलिए प्रोबेबली इन्होंने, हमास ने ये टाइमिंग चुनी। राइट। अभी ये जो इंटेलिजेंस जो फेलियर तो हुआ है, बट यू थिंक Israel will regather the intelligence if they because if they have to go in and carry out ground-based ops, right? They will need intelligence. Do you think Israel will be able to develop that kind of intelligence in the time frame in which they're looking at? बिल्कुल। वो शनिवार के झटका लगने के बाद पहली बात तो मैं बाकी चीजें, एक तो एक और फेलियर था कि इन्होंने टू मच रिलायंस ऑन टेक्नोलॉजी किया। Yeah. मतलब टेक्नोलॉजी के ऊपर बहुत ज्यादा yeah, this point had come out earlier also. तो देखो, ह्यूमन इंट को कोई रिप्लेस नहीं कर सकता, और क्योंकि ये छुट्टियों के दिन थे, मुझे लगता है, मैंने पहले भी देखा है, शायद नफरी भी थोड़ी कम हो पोस्ट वगैरह पे कि चलो ठीक है 10 की बजाय 6 आदमी काम कर सकते हैं, एंड वो लंबे आवर्स के लिए काम कर लेंगे। तो ये थोड़ा अदरवाइज आप देखो, इनकी मेन आर्मी है इसराइल की, मैं बताना चाहता हूँ, वैसे सबको पता है वहाँ कंस्क्रिप्शन है। जो इनकी मेन आर्मी है वो बच्चे हैं 18 साल से 21 साल तक के, 18 साल से 21 साल तक के लड़के और 18 से 20 साल की लड़कियां कंस्क्रिप्शन में आती हैं, और वो इनकी मेन आर्मी है 1 लाख की। बाकी जैसे कुछ बढ़ता है, ऐसे कोई लड़ाई करके औजार आते हैं, इमरजेंसी होती है, तो उस समय फिर रिजर्विस्ट को बुलाया जाता है। तो अभी क्योंकि इतनी कैजुअलिटीज होगी पहले दिन, तो इन्होंने 3,60,000 रिजर्विस्ट को भी बुला लिया है, क्योंकि लेबनान की तरफ भी काफी आर्टी फायर एक्सचेंज हो रहा है। आज सुनने में आया कि इन्होंने सीरिया में भी दमस्कस और अलेप्पो को बम्बार्ड किया है इसराइल ने। हो सकता है वो सीरिया को कोई सिग्नल दे रहे हो कि आप इसमें मत पड़िए, बट हो सकता है कि थोड़ा बहुत उधर से भी कुछ हो रहा हो, वो अभी हमें पता लगेगा आने वाले दिनों में। लेकिन जैसे अभी मैप में देख रहे हैं, इजिप्ट ग्रीन है, सबसे बड़ा दुश्मन था 1973 तक इजिप्ट इसराइल का, और सबसे बड़ा दुश्मन, सबसे ताकतवर। उसके बाद था सीरिया, फिर थे जॉर्डन और लेबनान एंड ये वो। इन्होंने 79 में इजिप्ट के साथ दोस्ती कर ली, यूएसए ने मदद की, अमेरिका ने, और उसके बाद 93 में इन्होंने ओस्लो ट्रीटी साइन की, जहां पर PLO को वो ओहदा दिया गया कि यही पैलेस्टीनियन के रिप्रेजेंटेटिव हैं, सही रिप्रेजेंटेटिव। PLO ने इसराइल को रिकॉग्नाइज किया। अगले साल 94 में जॉर्डन के साथ ट्रीटी होगी। तो इनको भी इजिप्ट और जॉर्डन से कोई खास खतरा नहीं है। सीरिया के साथ, क्योंकि सीरियन इंटरनल सिचुएशन थोड़ी खराब थी, बीच में कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत चलता रहता था जहां पर हम थे, बट फिर भी इनका कोई ऐसी तैयारी आइदर साइड की नहीं थी जहां ये एक दूसरे पे हमले की तैयारी करें। बट लेबनान इसमें घुस सकता है, और पक्का घुसेगा अगर कुछ भी, और नहीं तो पोस्टरिंग करके, थोड़ी बम्बार्डमेंट करके, वो इनके कुछ फोर्सेस को नदर्न बॉर्डर पे वो करके रखेगा एंगेज, ताकि गाजा की तरफ कम ट्रुप्स हों। लेकिन ये एसिमेट्रिक वॉर है, ये कोई वो लड़ाई नहीं है जो स्टैंडर्ड लड़ाई हम लड़ते हैं दो देशों के बीच में। एक लोग हैं जो ऑफ कोर्स कैजुअलिटीज उन्होंने 1200 कर दी है, बट उनके पास कोई एयरफोर्स नहीं है, आर्टिलरी नहीं है, उनके पास रॉकेट्स हैं, गन्स हैं, और बीच में सिविलियन भी रह रहे हैं। तो ये एसिमेट्रिकल बिल्कुल सिनेरियो है। इसमें आप कितनी फोर्स लगा सकते हो उस पर भी लिमिटेशन है, क्योंकि आपके खुद के 100 अगर प्रिजनर्स वो लेके गए हैं, तो आप उनको
कोलेटरल डैमेज में हो सकता है उनको भी किसी को कैजुअलिटी हो जाए, और जब सिविलियन कैजुअलिटीज बढ़ेगी तो इंटरनेशनल कम्युनिटी भी हल्ला करेगी। तो इसलिए ये आसान वो नहीं है, लेकिन वो जो इनका ह्यूमनेंट जिस भी तरीके से इन्होंने, इनके एजेंट्स हैं अंदर, और कुछ ने आपने देखा होगा फौदा सीरियल उस पे नेटफ्लिक्स पे, वो ह्यूमनेंट इनके पास है और वो रीएक्टिवेट इन्होंने कर दी है, तभी 2-4 दिन ये ले रहे हैं। और दूसरे ये 2-4 दिन मैं ये सोच रहा हूँ ये ग्राउंड ऑफेंसिव का पहला फेज था, क्योंकि अभी तक काफी हमस मिलिटेंट्स जो थे वो अभी इजराइल में ही थे और पूरा उसकी उनकी सफाई नहीं हुई थी। तो पहला फेज अभी खत्म होने वाला है, अभी वो सब क्लियर हो गया है, और जो इजरायली साइड का एरिया इसके साथ लगता है गाजा स्ट्रिप के साथ। तो इंटेलिजेंस दे हैव द स्लीपर सेल्स, दे हैव एवरीथिंग गोइंग। सिर्फ ये है कि दे वर लल्ड इनटू कि ये कुछ नहीं कर पाएंगे, और करेंगे भी छोटा मोटा करेंगे, उसको हम देख लेंगे। आयरन डोम जो कि 96% रॉकेट्स को एब्जॉर्ब कर लेता है, भी एक तरह से फेल हो गया, क्योंकि या तो उसको स्विच ऑन करने में टाइम लगा या व्हाटएवर, लेकिन वो ऐसा है कि जब आपके पास 7,000 प्रोजेक्टाइल्स, जनरल शंकर तो आर्टिलरी के हैं, 7,000 प्रोजेक्टाइल आपकी तरफ आएंगे तो कोई भी मशीन जो है वो पूरी तरह से वो भी कामयाब होगी। तो आयरन डोम को भी अभी मतलब उसकी एफिकेसी पे भी डाउट खड़े हो गए। सो इंटेलिजेंस इनके पास है, उसको रीएक्टिवेट कर रहे होंगे, कर दिया होगा इन्होंने अभी, और जब जाएंगे तो मेरे हिसाब से इनको फेज 2 में सिलेक्टेड टारगेट्स पे जाना पड़ेगा, जहां पर हमस लीडरशिप है और जहां पर इनके और स्पेशल ऑपरेशंस लॉन्च करने पड़ेंगे अपने बंदों को छुड़ाने के लिए। राइट, अभी जो खबर मिला है वो ये है कि they've created a safety belt, evacuated around the Gaza perimeter, and the US Secretary of State Anthony Blinken is in Israel, और बातचीत हो रहा है कि अगला स्टेप क्या लें, और ये प्रिपेयर कर रहे हैं। अभी तक कोई एंटर नहीं किया गाजा के अंदर, ये प्रिपेयर कर रहे हैं, राइट। सो एक्चुअली जैसे आपने बताया, वी आर सेट फॉर द नेक्स्ट स्टेज, व्हाट्स गोइंग टू हैपन, right? In the sequence of things, what's come out is this thing called the wartime unity government, or the national unity government, where Netanyahu and Gantz is the opposition leader, they've come together and they're forming a government. इसका आकार क्या होगा, इसका वैल्यू क्या, what will be the stability of this government? What do you think about this? Because you would have dealt with the politics of this whole place. Yeah, so नेतन्याहू को तो मैं नेशनल डे और यूएस नेशनल डे पे एम्बेसीज वगैरह में मिला हूँ, और उस समय जब जो प्रेसिडेंट है उनसे मिले, वी यूज्ड टू बी इंट्रोड्यूस्ड स्पेशली, बट बेनी गैंट्स के साथ मैंने काफी काम किया। ही वाज अ सीडीएस, और जब हमको पूरा मिशन सीरिया की तरफ से इधर लाना पड़ा, तो वी हैड अ मीटिंग for 2 days. Over the meeting we came to the conclusion कि कौन सी पोस्ट हमको होल्ड करनी चाहिए अभी भी, माउंट हरमन वाली, पहाड़ों वाली, और नीचे वाली हमने शिफ्ट करके इधर को आ गए थे। सो बेनी गैंट्स जब मैं साइन ऑफ करके आ रहा था, इससे पहले मैं आपका क्वेश्चन आंसर करूं, तो उनको पता लगा कि फोर्स कमांडर जा रहे हैं, कल जा रहे हैं, तो कहते हैं यार वो तो अभी उनका डेट नहीं था। कहते नहीं सर, वो आगे डेट और इज लिविंग टुमारो। कहते मेरे बिना मिले कैसे जा सकते हैं। तो मैं क्रिसमस डिनर कर रहा था ऑस्ट्रियन, नॉट ऑस्ट्रियन, ये आयरिश बटालियन के साथ। तो कहते हैं भाई आप आओ हमारे पास और मिलो हमारे को, 8 बजे मीटिंग होगी और उसके बाद डिनर होगा। तो मैंने कहा डिनर तो मैं 5 बजे कर रहा हूँ, क्योंकि क्रिसमस वाला डिनर है, और दूसरा मैं अभी यहाँ से बाई रोड आऊंगा तो मैं पहुंच नहीं पाऊंगा। तो हेलीकॉप्टर, मैंने ऐसे मजाक में बोले हेलीकॉप्टर भेज सकते हो, भेजो। फटाफट उन्होंने हेलीकॉप्टर भेजा। इंडियन ऑफिसर बड़े थ्रिल थे कि यार हमारे फोर्स कमांडर के लिए, जो हम वैसे नहीं यूज करते, बट इट वाज सो वी हैड अ नाइस मीटिंग एंड ही थैंक्ड मी फॉर एवरीथिंग, फॉर बीइंग इम्पार्शियल एंड फॉर बीइंग एट इट। तो बेनी गैंट्स इज अ सेंट्रिस्ट लीडर, ही इज नॉट राइट विंग लीडर।
70s 80s तक इनके लेबर लेफ्टिस्ट गवर्नमेंट्स वर Likud. रूलिंग. No, Liquid came in, as you know, yeah, 96 they came. Liquid is right wing. उन्होंने Okay. फिर जितने भी इनके रिलीजियस ग्रुप्स हैं और बाकियों के साथ इनकी ना रिप्रेजेंटेटिव वो है 120 सीटें हैं और जो 60 या 61 सीटें ले जाए वो गवर्नमेंट बना सकता है. कोई भी गवर्नमेंट कभी भी मेजोरिटी में नहीं आई. जैसे अपने यहाँ एक दो बार आई है, वहाँ कभी नहीं आई. तो एक दूसरे से कोलिशन करके ही गवर्नमेंट्स आती हैं. लेकिन इनका ये देखो नेशनल कैरेक्टर है. मैं देशवासियों को बताना चाहता हूँ, जब भी लड़ाई होती है तो नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट या वॉर टाइम यूनिटी गवर्नमेंट फॉर्म की जाती है. इससे दोनों ऑपोजिशन लीडर्स को इनवाइट किया था, दूसरा किसी कारण नहीं आया, ये लिपिड. और ये जो गैंट्स आए, बेनी गैंट्स इज अ वेरी वेरी बैलेंस्ड मैन. पिछली बार 60 वोटें थी, उन्होंने नई पार्टी शुरू की है ब्लू एंड व्हाइट. 60 वोटें थी तो बट वो दे प्लान टू शेयर द पावर. बट एनीवे वो चीजें पीछे चली गई. अब उन्होंने ये कहा कि बेनी गैंट्स से कि मैं आऊंगा, एक मेरा कंडीशन है. कहते क्या? कहते 5 एक्स फौजी होने चाहिए काउंसिल में. देखो अगर आप लड़ाई पे जा रहे हो तो आपके एडवाइजर्स जो हैं वो मतलब उस चीज से वाकिफ होना चाहिए, लड़ाई कैसे लड़नी है, कैसे लड़ी गई आज तक. तो इन दोनों को मिला के 3 और फौजी, उसमें डिफेंस मिनिस्टर भी आ गए उसमें. और अभी ये लोग एक उनमें इन्होंने और काउंसिल में बंदा लिया है जो एम्बेसडर था यूएस में. एंड नेतन्याहू अपने आप यूएन के एम्बेसडर थे. तो इंटरनेशनल कम्युनिटी को कैसे हैंडल करना है वो भी साथ में रखें. सो जब ऐसे लोग इकट्ठे बैठ के स्कीम बनाएंगे तो दे विल कम आउट विद वर्केबल सॉल्यूशंस, आई एम श्योर. Yeah, so that means, Joe, what are you saying is now the government politically they're going to be united. Yes. And they will not with take the any other bills. They will not handle any other bills, political bills, till the war is over. War is over. Yeah, and they're going to completely back the government, the military, to do what it has to do. Absolutely, absolutely. So there is what we are going to see henceforth. Whatever has happened earlier. What you're going to see henceforth is a complete unity and politico-military unity on, in fact, I will use the word politico-military fusion on the part of Israel from henceforth. Absolutely. Okay. So that sets the stage for, any offensive into thing. Okay. Now, having said this, do you think they'll be able to go in for an offensive immediately? You leave the political part of it out. Will they be prepared to go in for an offensive immediately, or will they take another 3 to 4 days before they really start getting into an offensive? So it's a matter of choice. वैसे ये देश कमाल करता है जब क्राइसिस में होता है ना, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर से लेके जब जितने ज्यूज को 6 मिलियन ज्यूज वर एलिमिनेटेड. सो इनमें वो जज्बा है और अगर जरूरत पड़ी तो ये कल भी तैयार होंगे. बट लाइक आई सेड कि ऑपरेशन थोड़े कॉम्प्लिकेटेड है, इंट्रिकेट है. Okay. हो सकता है 3-4 दिन और ले ले. एंड इन दिस लास्ट 4-5 डेज इन्होंने इंटरनेशनल कम्युनिटी को भी अपने साथ लेने की पूरी कोशिश की होगी, क्योंकि एवरीबडी राइट नाउ हैज सिंपैथी टुवर्ड्स देम. बट इतना ज्यादा लेट नहीं कर सकते कि फिर सिंपैथी थोड़ी उधर शिफ्ट हो जाएगी, उनकी पैलेस्टीनियंस की कैजुअलिटीज बढ़ जाएंगी. तो दे विल बी रेडी. दे वुड हैव बीन रेडी इवन 2 days बैक, बट they have to go in very deliberately. And intelligence अभी वो जाग चुके हैं intelligence वाले. Right. No, you made a very important point which I would like to highlight. You see, they're ready to go. On one hand, they can go. Yeah. On one hand, they want international cooperation and diplomacy so that everyone is with them. On the other hand, if they delay this, right, they lose international support because issues of humanitarian conditions and the effect of the siege and casualties. Already people have started talking of no fuel, people dying in hospitals and all that. Right? In the evening, I was seeing some channels who are highlighting it. And what's interesting, these channels which are highlighting all these are from the Western press, not from the non-West.
Mainly Okay. EU. EU is EU. Yeah, you said it. It's come from DW channel, the German channel, of all things, right? Now, so that counter pressure of having to wait till they're completely diplomatically with the international community on their side, vis-a-vis this business of humanitarian rights, means that they might have to go in the next 24 to 48 hours. quite possible. Quite In, possible. yeah, I mean that's what it points. They might shift it back to 72 hours or so, because in any Because case there are और शिफ्ट करेंगे तो लगेगा कि यार ये अभी तक मतलब क्यों नहीं किया? अभी तक शॉक में है which Yeah, okay. they recover Yeah, very fast. They they recover. recover very fast, देखो right? So, इन्होंने 67 और 73 में एक एक कंट्री के साथ सिचुएशन स्टेबलाइज करके फिर अपने फोर्स पूरी दूसरी साइड शिफ्ट की मतलब okay. दे ड्रू द बैलेंस सो फास्ट ओके देयर ऑन इंटीरियर लाइंस उनकी रोड्स बड़ी अच्छी बनी है Yeah, अभी और भी अच्छी yeah. बना दी है बट द पॉइंट इज सबसे पहले जब मेरे को लेके गए ब्रीफिंग के लिए आईडीएफ बिल्डिंग के ऊपर इट इज नेक्स्ट टू ए होटल तो होटल के ऊपर एक रेस्टोरेंट है सबसे ऊपर उसके ऊपर से मुझे दिखाया कि लुक एट द वेस्ट बैंक मतलब आवर कंट्री इज सो थिन if we don't protect Okay. ourselves we'll be thrown into the sea so this is the See, okay. kind of preparation they do when the UN and envoys and Right. all they come there so that's the that second cause is important highlighted point there. which you made. No, the second important point which you made, which is I think everyone should understand, that this country has the capability of handling multiple friends. Absolutely. After all, whether in the 67 war or even before that in their war of independence or in the Yom Kippur war, they handled the Egyptian front, they handled Jordan was not that much of a threat, right? If I remember right, Syria, Lebanon, जी, जी. all three, right? They handled threats from all three sides, and they handled it very well. On इसमें तो कोई किसी को doubt नहीं, history इसके is vouchers for that. So that means if they have to go in for a multiple front, one with Hamas and the second with Hezbollah, and if needed, even with Syria, with Assad, they can handle it. Yes, they Right? can. Yes. They can. So that capability is something that they can handle. They might be hard stretched, but they can handle it. So they have the क्योंकि capability. Yeah. क्योंकि सॉरी Go द ahead. मेन एनिमी Yeah. जो मेन उनका दुश्मन है वो एसिमेट्रिक वॉरफेयर कर रहा है वहां ज्यादा स्ट्रेंथ की जरूरत नहीं है वहां ज्यादा अक्ल की जरूरत है जहाँ दिमाग की जरूरत है. दिमाग की So yeah, I think this is the next point you made, that they will not lack for manpower. They have the technological capability. They have the national will. This is issues which before they get in, right? And they have the और एक capability पॉइंट to मैंने handle multiple engagements. या एक पॉइंट मैंने बताया नहीं वो हर लड़ाई में है उनका द इशू ऑफ सर्वाइवल कि आज अगर Okay. हम हार गए तो कल हमको ये समुद्र में फेंक देंगे ये Yeah. इनके दिमाग में So pressure है. right. So that means they always fight with their back to the wall. And right now, I think they're back with their back to the wall. Very bad. Right? They're back with a back to the wall. So I mean, we should not have any doubts that Israel can handle the situation. Right? How they handle the situation is a secondary point. As a nation, I think what you have brought out is that Israel can handle the situation well. Okay. Yeah. Now let me go to the other side, because that's not there in our slide, but I will ask. What about Hamas? What about Hezbollah? What about their connections? Yeah, Hamas, they're punched above their weight. Probably Okay. they didn't expect so many casualties, but they were very clear what is going to happen after this. It has happened to them so many times. 2014, 51 days, this engagement continued. I was there, very much there. And of course, on the Golan Heights, but then we were in the country and I was Yeah, talking you're to part of the. all the leaders. So they have lot of tenacity और उनको भी मतलब देखो 17-16 साल से उनका ब्लॉकेट चल रहा है जब से हमस पावर में आई 2007 में 2005 में एज ए एक्सपेरिमेंट एरियल शरोन ने सेटलमेंट्स वहां से निकलवा दी थी अंडर लॉट ऑफ रेजिस्टेंस फ्रॉम द सेटलर्स और उसके बाद इलेक्शन हुई तो हमस केम टू पावर
Fatah ने थोड़ी उनको Fatah tried to oppose him because Fatah was considered the successor of PLO on the Yeah, West Bank. They had some yeah, Al presence Fatah there. and उनको इन्होंने हरा के निकाल दिया. There was a lot of killing amongst them. 600-700 people died. The point is कि ये जो अभी जनरेशन है यंगस्टर्स की, ये सब बड़े हुए हैं इस खाना पीना और मेडिसिन की कमी हमेशा रही है पिछले 16 साल में. तो दे ऑल्सो फेल्ट कि दे वर पुश टू द वॉल, कि कोई पूरी दुनिया हमको भूल चुकी है और इसलिए दे वांटेड टू फ्लैग देयर इशू. तो दे आर मेंटली प्रिपेयर्ड. ऑल दे आर आस्किंग इज, आई मीन वेरी फनी दो, दे आर सेइंग कि अगर आप हमको वार्निंग नहीं करोगे आर्टी फायर करने से पहले, मतलब आर्टी फायर करो हमारे ऊपर, वार्निंग नहीं करोगे तो हम बेहेड करना शुरू कर देंगे लोगों को. Israel has been generally warning. First round is always warning. On Syrian side also. In those 3 years I found, whenever they wanted to fire on the Syrian side, first round was warning. So that आपकी आर्टी गन जहाँ से फायर आया, उसका जो क्रू है वो एकदम अलग अलग हो जाए और they destroy the gun. ये उनका modus operandi है. तो I think in their heart of heart, mentally, they were prepared कि भाई इसकी repercussions तो होंगी. और उन्होंने मीडिया को भी बड़ा तैयार करके लाए थे अपने साथ. इतना मीडिया मैंने देखा अभी. आई थिंक इजराइल्स मीडिया वाज मच मोर इफेक्टिव. इस बार इनका मीडिया हैज दे स्कोर्ड फ्यू पॉइंट्स ओवर दैट. yeah. तो it is going to be a tough nut to crack. Eventually, because of the tenacity and because they have to show to the world we can bounce back, Hamas के काफी उनके काफी रैंक्स दे विल बी एलिमिनेटेड. और सम स्टेज जब स्टेलमेट आ जाता है तो मे बी इंटरनेशनल कम्युनिटी विल बी एबल टू इंटरवेन. और उसमें इजिप्ट विल प्ले अ बिग रोल. अभी भी सोच रहे थे, भाई नेतन्याहू ने कहा कि ठीक है सिविलियंस आप लोग निकल जाओ यहाँ से, हम लोग कुछ करने वाले हैं. वो कहाँ निकल जाए यार, रास्ते तो सब बंद हैं. they can't go anywhere. कहाँ जाएंगे वो? सी में जाएंगे, मतलब कहाँ जाएंगे? तो they are trying to negotiate with Egypt कि आप हमको सेफ पैसेज दे दो. इजिप्ट अगर सेफ पैसेज देता है इसका मतलब वो उनकी सरदर्दी होगी. जितने भी ये 2.3 मिलियन में से जितने वहां जाते हैं उनको खिलाना पड़ेगा, उनको रखना पड़ेगा, उनको घर देने पड़ेंगे. तो ये भी सब चीजें चलेंगी इंटरनेशनल लेवल पे. इस समय वार्निंग के बाद क्या करते हैं ये लोग, जाते हैं यूएन स्कूल्स में. UNRWA रन्स यूएन स्कूल्स दे. तो यूएन स्कूल में मार्क है इनके पूरे टारगेट्स में, तो उनको अवॉइड करते हैं वो. तो दे लेट देम बी. बट अपने घर देखो 3,50,000 लोग, 3 लाख के करीब दे आर रेंडेड होमलेस ऑलरेडी, इंटरनली डिस्प्लेस हो गए. आने वाले दिनों में और होंगे. सो इट इज अ कैटास्ट्रॉफी इन द मेकिंग. लेकिन अरे वो भी रहेंगे कुछ देर. इट विल बी अ टफ फाइट. So it's going to be a tough fight. It's not going to be a walkover, and there's going to be a lot of casualties both. Yeah, long haul. It's not a easy solution. Yeah. And my guess is it might not be a military solution. Ultimately, it has to be a political solution, right? And you might not get a clear-cut military. All wars eventually have a political. Firstly, we have the political reason to go to war, and it is only the political settlement. Which will, yeah, I agree with you completely. War is just an instrument of polity, and that is where they fit in. Perfect. Okay, now let's look at a few other issues. What are the likely phases of this Israeli counteroffensive, and what are the options? We'll discuss both of these together. What I'll do is I'll put on this map, and you could, generally go with this. And so, there were a lot of tunnels coming out of गाजा से काफी टनल्स बना के इन्होंने, ये लोग आते रहे, बीच में 2-4 बार फायर करके चले गए. छोटे मोटे छुटपुट वो होते रहते थे. बट एज पर मेरे को ऐसे लग रहा है इजरायलीज को पता है कि इनका जो वॉर वेजिंग मटेरियल है, जितने भी इनके हथियार सब टनल्स में है. तो दे आर टैकलिंग देयर वन ऑफ द गुड पॉसिबिलिटीज फॉर देम टू, ताकि सिविलियंस की कैजुअलिटीज ना हो. वो कह रहे हैं जमीन पे एक लेयर है वो सिविलियंस का है और कुछ उसमें हमस के भी हैं, लेकिन एक नीचे लेयर है जमीन पे जो टनल्स हैं वो पूरा हमस का है. और वो बता रहे हैं सिविलियंस को आपने कहीं जाना भी है तो
नीचे मत जाओ टनल में. So I think the tunnels will be blocked first or they will be flushed out. So Okay. उसमें हमस का काफी क्लियरेंस हो जाएगी. But then Hamas will also come to the surface. Obviously they are not there to die. ठीक है, वो भी ऊपर जमीन पे आ जाएंगे. फिर वो थोड़ा फिर से कॉम्प्लेक्स हो जाएगा सिचुएशन. तो फेजेस, मैं कह रहा हूँ पहला फेज तो यही था पिछले 6-7 दिन में स्टेबलाइज द सिचुएशन और अपना बॉर्डर तक क्लियर करके, जैसे आपने बताया कि वो उन्होंने अभी एक तरह से एक बफर जोन सी बनाई है. बट दैट इज मोर ऑन द इजरायली साइड. अब इसके बाद अगर लड़ाई में जब एज एंड व्हेन जब जीत जाते हैं तो शायद ये उनकी तरफ बनाएंगे, उससे और एरिया कम हो जाएगा, उससे और भीड़ हो जाएगी उधर. ठीक है. दूसरा फेज so they're going to go from all around and start going into the center rather than going full scale in multiple prongs and all that. So no, exactly what जो आपने कहा है, ये अभी 10 या 12 पॉइंट सिलेक्ट करेंगे पूरे गाजा में जहां पर हमस की ज्यादा प्रेजेंस है, नॉन प्रेजेंस है, एंड इट विल बी कंफर्म्ड बाय इनकी जो ह्यूमन इंट है जो अंदर है, और उनको पहले डिस्ट्रॉय करेंगे. So it is more of small team operations, more of small team surgical operations. Surgical operations. You're going in for that. उसमें collateral होगा तो international community, human rights association जितनी भी है वो आएंगी बीच में. इसलिए पहले उनको वीक करेंगे हमस की लीडरशिप को, साथ साथ उनके रॉकेट्स वगैरह जहां पर डंप्ड है या क्या है, जहां इनको मालूम है, उनको वॉर वेजिंग मटेरियल को डिस्ट्रॉय करेंगे. ठीक है. और तो दिस वुड बी आई थिंक द सेकंड फेज, एंड फेज 3 वुड बी उसके बाद once the resistance stops coming in that strength, then they would clear some pockets, selected pockets, like you said, सीधे नहीं जाएंगे सेंटर में, वो selected pockets clear करके फिर ये लोग हो सकता है चौथे फेज में जाके एक बफर जोन बनाए अंदर. ठीक है. Okay. और इससे साथ साथ स्पेशल ऑपरेशंस लॉन्च करेंगे हर फेज के साथ टू गेट देयर कैप्टिव्स बैक. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. So what you're saying is you're looking at 3-4 operations going along simultaneously. One is special operations to free the hostages based on intelligence. The second is surgical operations to take out Hamas teams underground. The third will be to destroy the war-waging material of Hamas. And fourth is general bombardment from air or artillery or whatever it is, so that thing continues. Right? And simultaneously, this siege will also continue. After all, okay. And so it's going to be 16 साल से चल रही है, अभी थोड़ी ज्यादा टाइट होगी. That is it. जो टाइट हो जाएगा. At some time, if it goes for 2 weeks, 4 weeks, at sometimes they'll have to pump in food and water for the civilians. Yeah. So already people are talking. Yeah. Under international, already people are starting talking of international safe lanes for humanitarian aid and वो मैंने बताया आपको, the talks are going on. So so their aim would be to see and finish this whole thing of this thing, right? So this is the general mode of operations which will go on. Let's so talk a little bit. Classical operations. No, there's not a classical operation, and it's also, I mean, I'm sure you'll agree with me, it will not be a clean bombardment to raise apartment blocks and all that. They might knock off a not building, but it can't be complete bombardment where there's mass casualties. भाई अभी तो काफी डिस्ट्रक्शन हो चुकी है ऑलरेडी पिछले 5-6 दिन में. Already, okay. But sometimes the news channels also show old photographs of some areas. Oh yeah. But, forget that. Let's forget the information warfare which will go on. जितना भी information warfare will continue. But जितना भी कोशिश होनी चाहिए इनकी तरफ से, and knowing them well. बड़ा अच्छा स्टेटमेंट दिया था आज जोनाथन ने. He had worked with me. Jonathan Corners. He is a spokesperson. We may be angry, we may be upset, but we will still carry out operations like soldiers. So something like that, which is which shows a character. Yeah, and so these people are also going to go with a plan, right? There's no doubt about it. Right. Now, before I get into some kind of a final settlement
how do you visualize? I'll give you. We can discuss a couple of options. Let Yeah. me ask you, what are the extra regional or regional issues in this area which will impact what's going to happen hereafter? Whether it's So Iran, yeah, I must take my mind back to the first day when I went to the Middle East. जब आप बाहर से okay, पढ़ के जाते हो मिडिल ईस्ट में ना, तो आपको लगता है यार ये प्रॉब्लम बड़ा सिंपल है, व्हाई कांट इट बी सॉल्व? इन दोनों को पैलेस्टीनियन को गाजा और वेस्ट बैंक दे दो और 50-50% लैंड कर लो और आपस में रहो. जितना आप ज्यादा वहां रहते हो और जितना आप ज्यादा उनके बारे में जानकारी करते हो, उतना यू आर लेस प्रिपेयर्ड टू प्रिडिक्ट कल क्या होने वाला है. मैं बता रहा हूँ, कल क्या होगा मिडिल किसको पता? मिडिल ईस्ट में तो बिल्कुल नहीं पता. अच्छा देखो, या जब भी पीस आने की कोशिश की गई है, इजिप्शियन प्रेसिडेंट अनवर अल सदात, he signed this you know कैंप the डेविड Camp अकॉर्ड, David Accord 1978-79 में वो peace accord हो गया, और he was expelled. Egypt was expelled from Arab League for 3 years. या The headquarters या was in Egypt, in Cairo, या but they were expelled. So the headquarters also shifted. Then they came back. And later on, he was assassinated. यस, I must give credit to Prime Minister Rabin. He got, your Oslo Accords, and also with Jordan next year, they did this thing. He was killed by one of his own, या because 96 he was getting very close to giving more concessions to PLO. So यहाँ कोई predict कर ही नहीं सकता कल. अगर जो कहता है वो मिडिल ईस्ट को नहीं जानता अच्छे से. It is such a complex place. But having said that, there are, since, let's go back to First World War and Second World War very briefly. It was these powers today who are the permanent members of the United Nations, Britain and France, who had the two protectorates. Okay, यस, so France left Syria and created a country which is a Christian majority, if you may please, called Lebanon, and made Beirut like Paris of the East. Okay, before going. करेक्ट, And the Britishers left it in a mess. कि यार तुम आपस में बांट लेना 50-50, मैं जा रहा हूँ. ठीक है. They left this Palestine, then called Palestine, and some Palestine, Israeli yeah. settlements. They also messed up. But this was oil-rich region, and everybody's focus remained here. All colonies till date, you would agree with me, retain some presence in some form or the other, either commercial or other. So the amount of political awareness that I see in Jerusalem is nobody's business. Americans are there, they've got their own mission, peace mission or something going on. UN has got 4 missions, 1 political and 3 others. Okay. So all kinds of people are working there to kind of see that peace is there. It comes to that. Till 1979, Iran was the best friend of Israel, thanks to the Americans. 1979 में उधर वो साइन होगी पीस ट्रीटी विद इजिप्ट. यहाँ पर शाह ऑफ ईरान को निकाल दिया उन्होंने. तो दे बिकम, मैं किसी भी जनरल से बात करूं या पॉलिटिशियन से अगर इजराइल की बात करूं, डिफेंस मिनिस्टर या फॉरेन मिनिस्टर, he'll say our enemy number 1 is Israel. Israel's enemy number 1 is Iran. Enemy number 2 is Iran. Enemy number 3 is Iran. Then comes Hezbollah and all. So okay. they were very, very worried about Iran's getting nuclear, Iran trying to do this. And Iran has been supporting Hezbollah in the long war in the north. They supported the Syrian war. Of course, overspill was controlled by Syrians at the behest of the UN. We were there. बेबी इधर को मत जाने दो, नहीं तो तुम्हारे को भी ठोक देंगे. So, but whenever it happened, they punished them. So, Iran is always involved. Turkey used to be a friend of Israel. Then something happened at boat. Some soldiers were killed, and so they also, Turkey is at the cusp. They wanted to be part of
यूरोपियन यूनियन उनको वहाँ एक्सेप्ट नहीं किया गया, अब वो नेटो में है, सोच रहे हैं रहे नेटो में ना रहे, बट देन टर्की इज क्लोजर टू रशिया, रशिया इज क्लोजर टू ईरान, so there is kind of a little bit of best part, or the worst part is that this land which is initially inhabited by Arabs, इनका फ्यूचर डिसाइड करने वाले 2-3 नॉन अरब्स हैं, एक सऊदी अरेबिया को छोड़ के, and Egypt is quite weak. There's Israel, there is Iran, and there is Turkey. So none of them are Arabs. It's a very precarious situation. Okay. And there is a Shia crescent, as you know, from Iran through Iraq into Syria, and that goes to Hezbollah. And it's very interesting. Shia Sunni आपस में बेशक जितना लड़ेंगे, but Hamas is a Sunni party. Sunni, yes. And they're supported by Shia Iran and Shia Hezbollah in the north. So when it comes to interest of the country, that is number one. So ये पावर्स है. अभी देखो इम्पोर्टेंस जो मिडिल ईस्ट का जो तेल है उसकी इम्पोर्टेंस थोड़ी कम होती आ रही है, शेल गैस आ गई, अब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आ रही हैं, पीपल आर ट्रांसफरिंग, आई मीन द रिन्यूएबल एनर्जी आ गई है इन अ बिग वे. सो अभी इम्पोर्टेंस इनकी थोड़ी कम होनी शुरू हो जाएगी. दैट्स व्हाई यूएई, सऊदी अरेबिया, दे प्लेस देमसेल्व्स वेरी वेल. उन्होंने अपना टर्शियरी सेक्टर को बढ़ाया अच्छे से. दे आर डूइंग बैंकिंग, दे आर डूइंग बिजनेस विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, एंड दे आर फॉरवर्ड लुकिंग. 12 साल पहले मैंने बीबीसी पे इसकी इंटरव्यू देखी थी शेख की, कहते आई डोंट माइंड डूइंग बिजनेस विद इजराइल once they solve the problem with Palestinians, that kind of thing. So they were open to any changes, and now they're now they're already into a kind of a understanding. So extra regional powers and regional powers are totally involved in it. But most balance is Jordan. The king of Jordan maintains a balance, and they do intelligence sharing with Israel. Jordanian officers come to Israel to do courses, by the way. I've been a guest speaker there. So one other place. So, and Egypt, they have a good understanding, because besides that 20 years treaty and all that, US had given 22 billion to Egypt to modernize their army, which is spread over 20 years. So that kind of, these two, they don't have to worry. But the point is, Egyptians will come under pressure. There are in Sinai, which was traded, land for peace. That's why Sinai was given back to Egypt, and after the Accords. So there are some Bedouin tribes are there, and some of them are dealing into smuggling and all, and they also carried out a lot of terrorist attacks in the last few. In between ISIS, it was a herd. ISIS also had some presence there. So maybe रॉकेट्स वगैरह इधर से आते होंगे उनके वहां से, So Egypt is going to be under a lot of pressure to absorb some refugees, as also this thing, and it's the very, very, very trying times and very uncertain times in entry. So I mean, the net जो आपने बताया है, you're going to have a refugee problem, you're going to have a humanitarian problem, and it's not going to be a clean military affair. It's going to be a long drawn affair where we're going to see casualties from both sides. ये पहले की तरह नहीं है सिर्फ अदर साइड के कैजुअलिटीज हो, एंड नॉट Israelis also going to have पहले Israelis का जो रेशियो होता था उनकी कैजुअलिटी का, it was 1:5, 1:6 होता था. अगर एक इजरायली मरता था तो 5 अरब मरते. इस बार तो पहले से उन्होंने the casualty is already 4 figures against them. The casualty, the ratio is already against them, adversely against them. Said in the beginning, 2 wars के बराबर casualties already हो चुकी हैं. Already हो गए. और योम किपुर के से आधी casualties हो चुकी हैं पहले दिन. So you can't afford. You can't. Israel can't afford this. Going back to your point, more political solutions have to be found needed. Yeah. So I read somewhere, which I want to bounce off you, whether if it's feasible also. And the suggestion which came up was, fine, you do whatever you want to do against Hamas, and when the time comes, how about putting a multinational force into Gaza? And that multinational force has to come probably from Egypt, Saudi Arabia, Jordan, and all these other countries. It can't come. Okay, so that's out of the window. No.
No, what I'm saying, it can't come from, like you rightly said, from Egypt and Saudi Arabia. It will not come. But there is, what you said is right. There is already a force like that in Sinai that can be beefed Okay. up. It is Okay. American led, but they can be given no, blue berets and or either All build up that. on that, Because or we have got a lot of observers. There is one mission which only provides observers. That's a funny arrangement. It's the oldest mission, UNSO. They are in Jerusalem. okay. So they give about 70 observers to my mission on Golan Heights and about 60 to, to UNIFIL in Lebanon. So they can initially give some, all missions have started, they have been started by them, the mother of all missions. So some Okay. kind of a observing force has to be there. You're right. That can So be. so that means some kind of a peacekeeping force, whether it's a regional force which the UN makes, or from friendly countries or whichever acceptable countries, acceptable Acceptable. nationalities come, Yeah. right? Mutually acceptable to Palestine and Israel has to be the ultimate solution. Yeah. So I mean that means the UN has to come into play again in a big way. I think it is on the cards. It is on the cards. Yeah. Right. So I think this whole thing today is what the interaction we've had. You actually panned out what's in the future. It's going to be a messy future, Yeah. and if you take the Ukraine war into consideration and what's happening here into consideration and what's happening in the South China Sea also into Yeah. consideration, we're going to see Yes. a messy future for the next 1 to 2 years, and this is Absolutely. not going to be wished away. And the major point which you brought out that Israel won't have a walkover just by firepower. No, no, it's not a It's going walkover. to be, it's not a It's not a walkover, and cakewalk. this it's not a cakewalk by any stretch of Certainly not. imagination. Certainly not. Certainly Sir, not. you Right? get bogged down. You've seen Grozny. You have seen Ukraine Yeah, very yeah. recently. बाकमुट में देखिए आप क्या हुआ. Yeah. Tell him that. Yeah. Ultimately, Give an uh, example. yeah. The might. So, and right. So ultimately, and we also have looking at a solution, a situation where the Hamas fighters, whether we like it or not, are pretty experienced by now and Yeah. battle hardened. And Battle Israel, hardened and उनमें जुनून है जुनून. Junoon, and they are fighting Right. on their terrain, and Israel is not. And Yeah. Israel has got a lot of conscripts. आज जैसे आपने बोला बच्चे हैं 18 साल और 20 साल के तक, तो क्या उनके पास वो काबिलियत होगा टू हैंडल हमस और जुनून. एंड जुनून जो है फौज में ना, वो बैटलफील्ड में जैसे हमें पता है, हम सीए लड़ चुके हैं, राइट, किसी और जुनून के साथ. So we know what the kind of future Yeah. there is. Okay, so it's going to be a thing. So what we'll do, Ike, is we'll take some questions, and maybe after 10-15 days we'll come back and review the situation. Yeah, sure. By then, a lot Yeah, of